commission on profit and commission on profit after charging such commission, two important issues relating to profit and loss appropriation account. If commission is to be given to either manager or partner at stipulated rate, for example 10%, we have net profit of 67,000 and partners related expenses like interest on capital, salary, bonus, commission, remuneration amounted to 12,000. Means distributable profit जो हमारे पास है वो है 55,000. Out of 55,000, stipulated rate यानी 10% commission is to be given to manager. Now first possibility is commission. Manager's commission is on profit. On profit means profit before charging such commission. So this total composite amount is 100. 67,000 में से 12,000 का एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमारे पास 55,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है. उसमें से हमें दो पार्ट करने हैं, मैनेजर्स कमीशन एंड डिविजिबल प्रॉफिट. नाउ टोटल अमाउंट इज 100 एंड 10% इज टू बी कंप्यूटेड. सो फॉर्मूला इज कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू आर अपॉन 100. 55,000 10% is 5,500. After manager's commission 5,500. Now distributable profit is 49,500. डिविजिबल प्रॉफिट इज 49,500. तो यहां पे जो टोटल अमाउंट है, कंपोजिट अमाउंट है, वो 100 है. उसके दो पार्ट करने, कमीशन 10 है और डिविजिबल प्रॉफिट 90 है. कमीशन 10 एंड डिविजिबल प्रॉफिट 90. But there is another possibility that commission on profit after charging such commission, these adjustment frequently asked adjustment. Again, net profit is 67,000. Partner related expense, salary, bonus, commission, remuneration assumed at 12,000. Now distributable profit is amounted to 55,000. Now technical point is यहाँ पे हमें डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है मैनेजर को. तो जब तक हमारे पास कमीशन नहीं आएगा तब तक डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, और डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक कमीशन नहीं मिलेगा. यानी ये दो इंटर रिलेटेड आइटम्स है, और उसको ढूंढने के लिए हमें assumption करना होगा कि दिस डिविजिबल प्रॉफिट इज 100 because this rate of commission is applicable on this profit after charging such commission. So it's 100 and manager's commission is 10%. So here formula is commission is equal to profit before commission into R upon 100 plus R. तो अगर 10% है तो 10 by 110, 20% है तो 20 by 120 करना है. So 55,000 का 10 by 110 करने पे हमें अमाउंट मिलेगा 5,000. So 5,000 is manager's commission. After this commission, divisible profit is amounted to 50,000. So in case of commission on profit, 55,000 is split into 10 is to 90 proportion, and on commission on profit after charging such commission, this 55,000 split into two part, 10 and 10 is to 100. तो इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है R upon 100 plus R.